Okay. Hi guys. So hi guys. Let's just wait for a few minutes. Let's see if uh, somebody else joins too. Also, there's something that I've decided. Um, if you guys are watching the recording of this lecture or this session, you guys can just comment. ठीक है तो मैंने सोचा है कि अभी along with the PYQs तो हम कर ही रहे हैं from 2-3 days right along with that let's just do some topics as well like जो भी तुम्हें difficult लगता है either you can tell it आज chat में so that we can do it or just comment on the recorded video I'll just see and उसके बाद we'll see if we can cover those topics because bhale you have to solve the MCQs and PYQs are very important and all of these things. Ultimately, it's the concept that you're gonna get as a question, right? So we will do that. Okay, and right now it's 8:08. So the questions part we're gonna start from 8:10. आज कुछ है डिस्कस करने के लिए तो you guys can tell. बाकी 8:10 से we're gonna start some PYQs. So right. So I'll start by introducing myself. My name is Aarushi Anand and I am from Hindu College. I'm currently doing BSc Honors Zoology and I gave my CUET exam in 2023 and I scored 100 percentile in biology, psychology, English and 99.8 in chemistry and physics. So I am here to discuss some PYQs with you guys, questions that came in the last year's previous year and the last to last year. So I am here for the subject bio, and as you can see in the captions and stuff as well. So before that, before starting on with the PYQs, let's just see एक बार what are the other things that ExamFactor is offering you. So they are offering you a mock test series which is available for the subjects like accounts, BST, economics, maths, physics, chem, bio, history, geography, all science, psychology, English and general test. And
is a very simple reason about that why you should do a mock test series is because you're gonna have a lot of practice, right? And practice is something that will help you ace your CUET exam, because other than the concept, there are other things which makes you a good exam giver. I mean, that is basically a topper, which is um, time management and which questions to attempt and which questions not to attempt. And the other thing they are offering you is crash course, so they're gonna have one shot video lectures for for a particular subject in a for a particular chapter in a subject. So like for bio, they're gonna have एक आपका जेनेटिक्स में से जो 3 चैप्टर्स हैं उनकी वन वन शॉट वीडियोस, एंड देन द बायोटेक की एप्लीकेशन, सो इट्स गोना बी लाइक दैट. Moving on with the questions, so there are some questions that we've already discussed, तो उसको हम quickly skip कर देंगे. And I think that we have to start from here. ठीक है. Question number 31. Identify the terminal method used to prevent pregnancies. And the options are lactational amenorrhea, sterilization, intrauterine devices, which is IUDs, and periodic abstinence. I will say one thing again, that if there is any topic that you want to discuss abhi today after the questions are over, then वो आज ही बताना पड़ेगा, right? So बस एक बार chat में लिख दो. Otherwise, I'll just probably select a topic by myself and then discuss that. And for the question parts, like we always do, I'll just wait a minute and let you guys answer. Right. So the answer for this is देखते हुए lactational amenorrhea and periodic abstinence, ये सारे तो natural methods हैं. So this can't be a terminal method, right? And when we talk about IUDs, it's a very effective and a popular method, and वो भी एक kind of surgery से ही लगते हैं, but these are not exactly a very terminal method. So terminal method होगा आपके लिए sterilization, and sterilizations it is also known as a terminal method, and for females it's tubectomy, and for males it is vasectomy, as you can read in the solution as well. Read it fatafat. Right, so moving on, we have question number 32, which is agarose, a gel used as matrix in gel electrophoresis, is a natural polymer extracted from. The options are soybean, seaweeds, sea animal, and sea corals. Again, I'm gonna give you a minute to answer this question.
Yes, so what is the answer? What's the answer? Batao ek baar. The answer is seaweeds, as it is written in the book. Like the agarose gel, which is used in gel electrophoresis, is a natural polymer which is extracted from the seaweeds. ठीक है? And it's written that specifically from the cell walls of the red algae. ठीक है? So the correct option was B. Now, another question, question number 33. The natural interconnections of food chain is A, a GFC, B, a DFC, C, a food web, and D, biomass. So it's a very easy question, right? GFC and DFC are the food chain, right? Biomass can't be really the answer because that's not the interconnection. तो एक food chain का interconnection तो obviously एक web होगा, right? So that's food web. So the answer is C. As you can see in the solution as well. You can read the solution once. एक बार clarity रखने के लिए कोई पढ़ लो. Also, these are really the questions जो पिछले एग्जाम्स में आए थे क्योंकि there are some questions जो मेरे खुद के पेपर में थे. I mean, and I've said it in a lot of videos as well कि ये question तो मेरे एग्जाम में भी आया था. Okay, so next question. Uh, This might be a trick question. Select the hormone which is not secreted by human placenta. And your options are estrogen, progestogen, human chorionic gonadotropin, and D is luteinizing hormone. And इसी से मिलता जुलता एक और question है. Let's see if you can answer or not. Uh, so there is one hormone which is released by the ovaries. And I want you guys to tell me which hormone is that. And uh, in the book, there's only one hormone which is written that is released by ovary, and there are three hormones which are produced only during the pregnancy, like only during the pregnancy. So I want you guys to tell those three hormones, hormone produced by the ovary, and the answer to this question, of course. So let's start by the answer to this question. The answer of this question is luteinizing hormone, which cannot be produced by placenta because it's produced in by the anterior part of the pituitary gland, right? So it's that hormone. And HCG, progestogen, and estrogen. ये सारे hormones they are produced by the placenta.
ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग कि जो नॉर्मली हम बात करते हैं वो प्रोजेस्टोस्टेरॉन होता है एंड दिस इज प्रोजेस्टोजन, सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है. बाकी for the other three hormones that are only produced during the pregnancy, they are human chorionic gonadotrophin, and the other is HPL, which is human placental lactogen. ठीक है. And the hormone which is produced by ovary. And what is that? ये भी पूछा था मैंने. Anyway, मैं बता देती हूँ. That hormone is relaxin. Now there's a trick to remember this hormone. ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था. सो ओवरी का वेरी लाइक मिलता जुलता राइमिंग इज वरी, राइट? ओवरी का वरी, राइट? सो the trick that I created was relax, don't worry. So it's like the relaxin hormone is produced by ovary. So relax, don't worry. That's the trick that you can use if you want to remember which hormone is released by ovary. Now this is the solution that you might want to read. So read it once. So moving on, we have question number 35, column 1. It's a match the following question. So in column 1 we have polyembryony, parthenocarpy, false fruit and embryo sac. And in the column 2 we have apple, female gametophyte, orange and banana. So you have to match the following. इसके जो options हैं वो इधर दिए हुए हैं, but पहले you match, ठीक है, and then we're gonna see which option is correct. And as I've always and as मैंने पहले भी बताया है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में एलिमिनेट करने का ट्राई करा करो एंड स्टार्ट विद द मोस्ट लाइक विद द इजीएस्ट ऑप्शन. फॉर देखो जैसे मुझे इंस्टेंटली मेरे को पॉलीएम्ब्रियोनी में प्रॉब्ली आई थिंक अबाउट इट कि क्या होगा, बट पार्थेनोकार्पी के लिए आई एम इंस्टेंटली लाइक बनाना है. फॉल्स फ्रूट के लिए आई इंस्टेंटली बी लाइक एप्पल है. एम्ब्रियो सैक के लिए ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फीमेल gametophyte. पॉलीएम्ब्रियोनी लेफ्ट इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑरेंज, है ना? सो डू इट लाइक that select the most easiest, like the easiest thing, ठीक है, एंड उसको मैच करो. उसके बाद अपने आप एलिमिनेट होता जाएगा एंड उसके बाद यू सी व्हाट इज द प्रोबेबल आंसर. ठीक है, फॉर दिस वी आर गेटिंग 1 का 3, देन 2 का 4, 1 का 3 एंड 2 के 4 के लिए वी हैव टू ऑप्शंस बी एंड डी, एंड देन वी हैव 3 का 1. So this makes it option number B. And इसके लिए also we have to very clear कि आप options कौन सा choose कर रहे हो. मान लो आपने match सही किया हो but options incorrect choose कर लिया क्योंकि जल्दी जल्दी में याद हो गया. So double check your answer. एक बार अगर आपने match the following ऐसे check कर लिया कि इसका क्या है उसका क्या है, then go to the option and see क्या 1 का 3 है, then polyembryonic का orange है, right? 2 का 4 है, पार्थिनोकार्पी का बनाना है, राइट? 3 का 1 है, फॉल्स फ्रूट का एप्पल है,
एंड 4 का 2 है, एम्ब्रियो सैक का फीमेल गेमेटोफाइट है। लाइक ऐसा नहीं होता था कि आई थिंक बचपन में व्हेन वी वर प्रॉब्ली इन फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ, सो we used to do multiplication division and then we used to go backwards कि हाँ चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका यही है। मतलब जो सबसे पहले पहले जब तुमने अलजेब्रा पढ़ी होगी तो जब तुम x निकालते थे तो यू नो अ लॉट ऑफ टीचर्स तुम्हें बोलती होंगी कि वो वैल्यू x की वहाँ पे पुट करके देखो एंड देन सी इफ द इक्वेशन मेक सेंस और नॉट। सो इट्स लाइक द सेम थिंग, एक बार सॉल्व कर लिया देन गो बैकवर्ड्स। एनीवे, so एक बार for revision let's just read also what is polyembryony, parthenocarpy and a false fruit, like ये सब होता क्या है, ठीक है। So polyembryony is a phenomenon where multiple embryos develop, as the name suggests, polyembryony. तो multiple embryos develop हो जाते हैं from single fertilized egg or multiple eggs within a single seed or fruit. It is commonly observed in oranges. ठीक है, parthenocarpy is a development of fruits in which fertilization does not occur, ठीक है, and it is observed in bananas, right? So the fruits that develop, they are seedless, like banana. A false fruit is something, okay, so this you might know, okay? So a false fruit is a fruit that is derived from the ovary of the flower along with other floral parts such as receptacle. Apples are an example of false fruit because they develop from the thalamus or the receptacle of the flower along with other parts. तो जिन flower में ऐसी सब चीजें लग रही हैं, that is a false fruit. And उसकी example, one more example for that is cashew. And embryo sac तो female gametophyte को बोलते हैं, मतलब female gametophyte is the embryo sac, so there's no doubt about it. Now, question number 36. Identify the gene which is not effective against cotton bollworm. And this might be one of the questions यहाँ पे तुम confuse हो जाओगे because cry1AB, AC, 2AC ये सारे थोड़े confusing genes हैं. So basically, these cry genes are toxin coding genes. ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं बीटी टॉक्सिन कोडिंग genes, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, बैसिलस थर्मोजेनेसिस से, राइट? And these genes are named cry genes, है ना? And these are um, insect group specific, है ना? And there are two examples, like दो चीज़ों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कॉटन बॉलवर्म्स के लिए दिए, कॉटन बॉलवर्म्स जो इंसेक्ट है, पेस्ट है बेसिकली, उसके लिए दिया हुआ है, एंड कॉर्न बोरल के लिए दिया हुआ है। तो कॉटन बॉलवर्म्स के लिए जब दो जीन्स दी हुई है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉटन कॉर्न बोरल, ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई द जीन्स जो कॉटन बॉलवर्म की है। Okay, so cotton bollworms के लिए the gene is cry1AC and cry2AB. तो ये हम ऑप्शन में से निकाल देंगे. So the answer becomes cry1AB. ठीक है, that is a gene which is not effective against cotton bollworm. And yes, the correct option is A. So what are these cry genes? So these genes are from Bacillus thuringiensis, which is BT.
that code for insecticidal proteins used in genetically modified cotton varieties to provide resistance against cotton bollworm. These proteins been effective in controlling effective in controlling the pest. So BT here stands for Bacillus thuringiensis and not bad trip, right? चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 37. Read the following comprehension and answer the given questions. Parasitism has evolved in many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Many parasites have evolved to be host specific in such a way that both host and parasite tend to co evolve. In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations and complex life cycle. Complex life cycle of parasites mean A. Having only one intermediate host. B. Having special adaptations to cling onto the host. C. Having many hosts. And D is having one or more intermediate hosts to facilitate cytization of its primary host. So the answer for this is because special adaptations to cling onto the host. ये कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है एंड इन सम केसेस तो उनकी जो उनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स होने की बजाय सिंपल हो जाते हैं मतलब वो तो दे इवॉल्व इन दैट वे ठीक है हैविंग वन इंटरमीडिएट होस्ट इज नॉट अ थिंग ठीक है सो द आंसर फॉर दैट दिस इज डी विच इज हैविंग वन or more intermediate hosts to facilitate parasitization of its primary host. So this is the answer D. अगर कोई डाउट है तो you can read the explanation once and you probably your doubt will be solved then. So I'm thinking कि next question solve करते हैं फिर. हाँ, so
This is the comprehension, same comprehension. Agar if you want to read it again, then you can. I mean, you should actually read this again, right? Now, parasites harm the host by reducing its size, improving its growth and reproduction, reducing its survival growth, reproduction, and population density, and improving its survival growth and reproduction. हाँ, तो दिस इज तो एक प्रॉपर बुक की लाइन जो दी हुई है बुक में एग्जैक्टली पैरासाइट्स हार्म द होस्ट बाय एंड द ऑप्शन इज सी देखो ए हो नहीं सकता टेक्निकली पॉसिबल नहीं है फॉर द पैरासाइट टू रिड्यूस द साइज हाँ बट पॉपुलेशन साइज रिड्यूस करना पैरासाइट के हाथ में है इम्प्रूविंग तो नहीं करेगा हार्म कैसे हुआ फिर एंड सर्वाइवल डी भी नहीं होगा राइट सो द ऑप्शन इज सी विच इज रिड्यूसिंग इट्स सर्वाइवल ग्रोथ reproduction, and population density. So that's the answer. Again, I'd say that if you have any doubt, you can read this explanation and that might clear your doubt. Let's move on. Okay. So this is the same comprehension again, the same paragraph, which is parasitism has evolved in many taxonomic group. एक तरह से पढ़ना इसलिए important है because next slide में है ऑप्शन तो ये फिर आपका चेंज हो जाएगा तो you just एक बार like read it once. So parasitism has evolved in many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Many parasites have evolved to be host specific in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. In accordance with their lifestyles, parasite evolves special adaptations and complex life cycle. So the question is match the column 1 and column 2. Column 1 is cuckoo and crow, copepods, plasmodium, orchids, and mango tree. This probably will take time, 1 or 2 minutes. So मैं देती हूँ 1 or 2 minutes.
ओके, सो देयर आर फ्यू मैसेजेस मतलब लाइव चैट में पाए जो मैंने अभी अभी देखे, एंड सॉरी मैंने पहले नहीं देखे बिकॉज आए नहीं थे, आई मीन अभी लोड हो जाके। एनीवे, केमिस्ट्री की क्लास होती है। हाँ, आई थिंक शायद केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज नहीं होते थे। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और डोमेन में हिस्ट्री एंड ऑल्सो गॉट जीटी ली है, तो मैंने सही सब्जेक्ट चूज किए हैं, टेल मी। देखो, ये तो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है इफ द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव चोजन इज करेक्ट और नॉट। अगर आपने देखो डीयू में आना है, तो सामर्थ की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसमें जो सारे कोर्सेज के वो दिए हुए हैं requirements. Like for example, for BSc Bio, I had this requirement that I needed physics, chemistry, and biology. So no English, no general test, nothing, just PCB. So मेरे सिर्फ उसी के मार्क्स लगे थे, ऑल्दो मैंने इंग्लिश और जनरल टेस्ट और साइकोलॉजी में भी एग्ज़ाम दिया था। वो मैंने दिया था इफ़ आई वांटेड टू डू एनीथिंग एल्स, लाइक अगर मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स करने का मन होता, विच इज़ बीए साइकोलॉजी। सो उसमें मेरा था कि आई हैड टू डू एनी 4 सब्जेक्ट्स, लाइक एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड एनी 1 इंग्लिश थिंग। So that was the thing. Now let's come back to the question. तो तुम देख सकते हो सामर्थ की वेबसाइट पे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कोर्स दैट यू वांट टू डू। ठीक है। हाँ, the answer for this. तो like I said before also, easy से start करते हैं। तो सबसे पहले कको एंड क्रो, तो यू नो इट्स ब्रूट पैरासाइटिज्म, इट कैनॉट बी एनीथिंग एल्स, है ना। तो वन कको एंड क्रो इज ब्रूट पैरासाइटिज्म। Then I'll go to Plasmodium. Plasmodium is obviously a parasite, so it becomes an endoparasite, right? Or orchids and mango tree, if you remember, it's commensal organism, so that coppepods is automatically predation. So the answer becomes 1 3. 1 3 में we have two options, A and B, and 2 का 1. So 1 3 2 1 3 4 3 4 and 4 2. So option B is the correct option. So this is the thing. Now, एक बार read why is that. So ब्रूट पैरासाइटिज्म तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उसके बारे में तो तुमने पढ़ा ही होगा, है ना, कि जो ककू होते हैं, दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड स्पीशीज लाइक क्रोज, ठीक है, एंड देन दे रेज देम, and the egg of the cuckoo resembles the egg of the crow. So the crow is gonna raise them as if it's their own, and this is a sort of, it's a form of a parasitism, है ना. So cuckoo is benefited from that, and the host is having detrimental effects from that. ऐसा क्यों? बिकॉज इन द बुक इट्स मेंशन कि ककू के जो एक्स जब चिक्स बन जाते हैं, तो वो जो क्रोस के चिक्स हैं, उसको उनको भी साइड कर देते हैं, राइट? दे compete for resources. Now, column 2. Now, the interaction between copepods and fish is typically a form of predation. Copepods are tiny crustaceans that serve as a primary component to the diet for many species of fish. In this interaction, the fish are the predators and the copepods are the prey. ठीक है?
Now, Plasmodium obviously is a parasite, it's an endoparasite, and it is responsible for causing malaria. And orchid is an epiphyte, which is an autotrophic plant that lacks mechanical tissue and grows on the mango trees for deriving support. अब mango tree का तो कुछ भी नहीं जा रहा, but ऑर्किड एपिफाइट को एक वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है टू ग्रो, सो दैट बिकम्स अ कमेंसल थिंग. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. um read the following comprehension. Okay, it's the same comprehension. There are some statements given. I think there are four statements given. Statement 1 is host and parasites tend to co-evolve. Now you have to identify the statements which are not true with respect to the host parasite relationship. So the statement 1 is hosts and parasites tend to co-evolve. Statement 4 is parasites have evolved elaborate nervous system for survival. Statement 3 is if the host evolves to reject the parasite has also evolved to counteract them in order to be successful with same host species. Now, statement 4 is if the host evolves special mechanisms for rejecting the parasites evolves to be successful in another host species. So you have to tell which statements are incorrect. तो मैं 1 मिनट आपको पिछले स्लाइड पे देती हूँ सो दैट यू कैन रीड इट अगेन एंड देन मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी सो दैट यू कैन रीड दैट स्लाइड ऑल्सो अगेन. And these are the other two statements. Now you have to tell me which statement is incorrect. So host and parasite tend to co-evolve, ये तो सही है. Parasites have evolved elaborated nervous system for survival. This is not true, right? So जो parasites होते हैं वो तो आपको वो उनके तो simple हो जाते हैं बल्कि systems because they don't really have anything to do inside an organism. So statement 2 to for sure. So now there are two options, statement 1 and statement 2 only, and statement 2 and 4. तो ऑप्शन सी इज ऑटोमेटिकली करेक्ट क्योंकि 1 तो सही था,
बट एनीवे एक बार जैसे इसे पढ़ भी लेते हैं दोबारा. If the host was to reject the parasite also was to counteract them in order to be successful with the same host species. तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, which is the same host species, and option 4 says another host species. तो if the organism is co-evolving according to a particular species, तो वो किसी और species को जाके successfully parasite क्यों करेगा, है ना? So obviously the answer for this is 3, sorry, 4 and 2, which makes it option C. I hope clear. Just for the clarification once more, एक बार fourth statement और पढ़ लो, like not the other statements समझ आ गए होंगे, बस एक बार fourth पढ़ लो. Okay, so there is one more question. ये question करने के बाद we'll take a break क्योंकि आज लेट हो गया है थोड़ा. तो हम जो like the thing that I said ना कि हम we will discuss one topic also, and since you guys haven't said anything about that right now, so I'm just assuming कि इस वीडियो के रिकॉर्डेड पार्ट में एक दो टॉपिक्स आ जाएंगे, तो उस हिसाब से विल टेक टॉपिक्स. अदरवाइज आई एम जस्ट गोना टेक अ टॉपिक माई सेल्फ द नेक्स्ट क्लास. वो मैं डिसाइड कर लूँगी पहले से, है ना? तो अभी इट्स द लास्ट क्वेश्चन, ये वाला कर लो एंड देन वील कॉल इट ऑफ फॉर टुडे. So then again it's the same comprehension, but it's the main question is, what are the intermediate hosts for human liver fluke? So you have to tell if it's snail or fish, fish man, snail and freshwater mussels. तो क्वेश्चन तो ये बहुत ही डायरेक्ट है, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात तो है नहीं. तो ह्यूमन लिवर फ्लूक के जो इंटरमीडिएट होस्ट है, that is snail and fish, which is option A. So this is a छोटा सा life cycle of human liver fluke which is given. So you guys can read it एक बार just for extra information or just for a clarification. ऐसा कुछ है नहीं कि बुक में दिया हुआ है या एग्जाम में आने की probability थोड़ी सी कम है, but read it.
Okay, so I believe that you might have read it by now. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला या उसमें कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप नहीं था, है ना, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। और हाँ, यू माइट फील कि ये तो बहुत ही इन डेप्थ, मतलब बहुत ही एनसीईआरटी के लाइन से खोद के निकाला है क्वेश्चन, ना कि लिवर फ्लू के इंटरमीडिएट होस्ट कौन से होते हैं। बट या दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोना कम इन सीयूईटी। सीयूईटी में पता है आपके समझने बेस्ड क्वेश्चंस कम और याद करने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं कि आपको क्या क्या याद है, लाइन बाय लाइन क्या याद है। और rather देन कि बायोटेक में ऐसा 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 क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, देन ऐसा होता है, देन ऐसा होता है, क्यों होता है, वो समझने वाले क्वेश्चन से ज़्यादा ना आपकी रट्टा मार वाले क्वेश्चन आएंगे। सो जस्ट बी अटेंटिव टू दैट कि उसको व्हाट स्ट्रेटजी डू यू मेक टू सॉल्व दैट। ठीक है, एक बार जस्ट डू दैट। Is there any other thing that you want to know or you want to discuss? चलो फिर, thank you for today. Was a long it became a long video actually. So all the best for your CUET preparation. And before calling it off for today, I just want to remind you कि एग्ज़ाम फैक्टर के जो मॉक टेस्ट है दैट यू कैन टेक, ठीक है, एंड बहुत अच्छे भी बनाए हैं। एंड द मॉक टेस्ट यू कैन फाइंड इट ऑन देयर वेबसाइट। सो एग्ज़ाम फैक्टर की वेबसाइट पे जाना, यू कैन फाइंड मॉक टेस्ट एंड क्रैश कोर्सेज। एंड मॉक टेस्ट में there would be a number given या फिर मतलब contact details होंगी। If you are interested in purchasing that, you can contact to that person and they'll contact you back, ठीक है, and then you can ask, oh, how do you want to do it, mock test। And mock test, I would suggest you to do mock test चाहे तुम कोई भी करो, because उससे प्रैक्टिस होती है। एंड देयर वुड बी एन एडवांटेज इफ यू डू CBT मॉक टेस्ट rather than some purchasing some books and doing question tick वाले मॉक टेस्ट। द रीज़न फॉर दैट इज़ एक्चुअली होता क्या है कि जो CBT होता है ना, उसमें तुम्हारी गड़बड़ होने के चांसेस इसलिए होते हैं बिकॉज यू माइट क्लिक वन ऑप्शन बट कोई और ऑप्शन क्लिक हो जाए, ऐसा टिक टिक वाले में नहीं होता। तो you have to be fluent with that। And honestly it's not just about concept or it's मतलब when you are giving an entrance exam ना, मतलब boards और school exams तो बहुत different होते हैं, but school exams में you see a lot of similar faces, familiar faces around yourself, but entrance exam में ऐसा नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम में इट्स लाइक यू सी कि पता नहीं कौन कौन आया हुआ है, you don't know anybody and you are just alone solving for yourself। So एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम्हारा सेंटर कितना दूर है। स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम पास में होते हैं, CUET का एग्ज़ाम पर सेंटर कहाँ पड़ता है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। सो देर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन दिस सिचुएशन इन एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसमें अगर तुम CBT मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे वन न्यूनेस वुड बी लेस, लाइक एक जो कंफर्ट जोन, मतलब एक चीज़ होगी जो कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगी कि हाँ, मेरे को अब CBT की प्रैक्टिस हो गई है। सो दैट वुड मेक योर CUET एक्सपीरियंस अ लिटिल स्मूदर एंड विच इज़ गोना हेल्प यू
in any case. So just do that. And with that, let's just call it off for today. Thank you so much for being here. Bye bye.